हरणी मोटनाथ महादेव के पास विश्वामित्री नदी में से एक युवक की लाश मिली है। हरणी विस्तार के मोटनाथ महादेव के पास विश्वामित्री नदी में से हरणी गांव के जगदीश राठौड़िया की लाश फतेहगंज पुलिस ने बरामद की है। गांव के निवासी और पुलिस के अनुसार मगर युवक के हाथ और पांव खा गया है। हरणी विस्तार છે ને વિશ્વામિત્રી નદી છે। હવે એની વાઈફ મારે ત્યાં ઘરકામ કરે છે। એને મને કહ્યું કે મારા ધણી 4-5 દિવસથી લાપતા છે, એટલે મેં બધા સગા સંબંધીને ફોન કરીને પૂછ્યું તો કે અહીં આવ્યા નથી। એટલે અમે કાલે થોડા શોધ્યા, પછી આજે શોધ્યા તે અહીંયા આવી અને જોયું। પછી એના જમાઈને બોલાવ્યા। એના જમાઈ કે અમારા સસરા જ છે ઓળખાણમાં। એમની 55 વર્ષની ઉંમર હશે અને એનું નામ જગદીશભાઈ અરખાભાઈ રાઠોડિયા। हाँ, मैं पुलिस ने पछी कारेलीबाग फोन कर्यो तो कि अमे जोई लईए। पछी आई नहीं कि अमारी हदमां नथी। ना मोने खबर नहीं पड़ी। पछी फतेहगंज आया। फतेहगंज ने वाला आया ते पूछ्યું तो कि ये तालुकाना छे। तालुकाने बे भेगा थया छे। हवे शुं करे छे खबर नहीं। हाँ, अमने कारेलीबाग पोलीस स्टेशन ने PCR 43 से जाण करी अने एमने कंट्रोल में जाण करी। एटले फतेहगंज पोलीस स्टेशन द्वारा कि अहीं नदीना पट नीचे लाश पड़ी है। त्यारबाद अमे आवी जोयुं अने तपास चालू है। हजू मारे लाश तो पानी में तरे है। लगभग 5-7 दिवसनी जणाई आवेल छे अने एमां एवुं छे कि एक हाथ अने पग मगरमच्छे करडी काढेલું नजरमां આવ્યું છે। संबंधीओ આવ્યા છે પણ હજુ એ તો હવે હાલમાં તો એમને જાણ નથી કરી કે આ તમારી જ લાશ છે। એ તો પછી તપાસને બાદ એ એમને જાણ થશે।